Hello friends, welcome to Learnology. As I previously told that our new topic is human eye from chapter 11, sense organ, unit number 3, human anatomy and physiology. So first of all, what are sensory organs? The sense organ enable us to be aware of the conditions of our external as well as internal environment. The major sense organs in our body, ऐसे बहुत सारे सेंस ऑर्गन है, लेकिन जो मेजर सेंस ऑर्गन है वो आई, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. विच आर सेंसिटिव टू लाइट, साउंड, केमिकल सब्सटेंसेस, टच एंड सो ऑन. इन एडिशन देयर आर ऑल्सो सेंसेस बैलेंस, body movements, hunger, thirst and pain. The actual sensation perceived by the sensory cells located in these organs, such cells are categorized as receptors. अब ऐसे बहुत सारे receptors आपने definitely सुने होंगे या पढ़े होंगे. अब ये यहाँ पर भी जितने receptor given हैं उसके बारे में one by one देखेंगे. नाम से ही आपको receptors के बारे में clear हो जाएगा. So first of all, what is receptor? Receptor is any specialized tissue or cell sensitive to a specific stimulus. First is photoreceptors. Photo means light. Yani photoreceptor is related to light. Are rod and cones of the retina of eye. These are sensitive to light and are responsible for vision. Next is phonoreceptors. Phono means sound. Are receptors present in the inner ear. ये receptors inner ear में present होते हैं, phonoreceptors. These are sensitive to sound and are responsible for hearing and balance. Next is your chemoreceptor. Chemo means chemical. Are receptors of the tongue and nose. They are sensitive to chemical substances and are responsible for taste and smell. Thermo, related to temperature. Are temperature sensing receptors present in the skin. ये temperature sensing जो receptors होते हैं वो skin में present होते हैं. They are sensitive to relative changes in the temperature and are responsible for our body feeling hot or cold. Next and last is your mechanoreceptor. Mechano, related to mechanical stimulus. Are receptors present in the skin. मैकेनोरिसेप्टर्स भी स्किन में ही प्रेजेंट होते हैं. दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट मैकेनिकल स्टिमुलाई सच एज टच, प्रेशर एंड वाइब्रेशन. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आई. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली आई इज. एज यू ऑल नो दैट आई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी जिससे हम देख पाते हैं. इसमें भी आप ऑर्बिट्स देखोगे, आईलिड्स देखोगे, आईब्रो, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर ऑल्सो देयर, लैक्राइमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड एंड सो ऑन. फर्स्ट इज ऑर्बिट. द टू आईज आर लोकेटेड इन डीप सॉकेट्स, और जिन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिस सॉकेट में हमारी आई प्रेजेंट होती है. ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड ईच आई इज इन फॉर्म ऑफ अ बॉल एंड कैन बी रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ 6 मसल्स. देयर आर 6 मसल्स इन ऑर्बिट्स. Eyelids, the upper movable and lower eyelids protect the outer surface of the eye and can shut out light. Each eyelid carries outwardly curved eyelashes which prevent falling of larger particle into eye. यानी eyelashes का function क्या है, वो prevent करते हैं कि कोई बड़ा सा particle eye में ना गिरने पाए या ना आने पाए. Next is your eyebrows. Although virtually not a part of eye, यानी eyebrow वैसे तो आई का पार्ट नहीं है. These are also protective. They prevent the raindrops or the trickling perspiration from getting into the eyes. यानी sweat को, trickling perspiration means sweat, from getting into the eyes, यानी पसीना आँख तक ना पहुँचने पाए उसको रोकता है. That is eyebrows. Next is your tear glands. Tear glands is also called lacrimal gland. They are located at the upper sideward portion of the orbit. 6 to 12 ducts of the gland pour the secretion over the front surface. See this, everyone. This is a very important figure. Lacrimal apparatus of the human eye. This is lacrimal sac, nasolacrimal duct, lacrimal gland, lacrimal duct, duct of lacrimal gland.
These movements of the eyelids, जिसे आप blinking बोलते हो, पलक झपकाना, spread the liquid which mainly serve as lubricant, यानी जो पलक झपकती है उस झपकना भी बहुत ज़रूरी है. वो करता क्या है कि वो लिक्विड जो प्रेजेंट होता है हमारे आई में उसको वो पूरे आई में स्प्रेड करने का काम करता है, which also serve as a lubricant. The tear also keep the front surface of the eye clean by washing away dust particle. Yes. They also have an antiseptic property and also a very important enzyme that is lysozyme which kills the germs. Lysozyme का क्या फंक्शन होता है कि वो germs को किल करने का काम करता है. Next is your tear ducts. These ducts drain off the liquid into a sac lying at the inner angle of the eye. A nasolacrimal gland, nasolacrimal duct, conducts the secretion into the nasal cavity. All of us have sometimes experienced that medicines dropped in the eyes come into the nose and even into the throat as well. ये तो सबके साथ हुआ होगा कि कभी कभी जब हम मेडिसिन्स अपने आँख में डालते हैं तो कभी कभी वो हमारे नोज़ या थ्रोट में भी आ जाती है. दिस हैपेंस थ्रू द अबव मेंशन डक्ट. ये जो नेक्सोलैक्राइमल डक्ट मेंशन है उसी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. Due to irritation or in a certain emotional states, the tear glands pour out a lot of liquid which waters the eyes as overflows as tears. You may shed tears both in grief and extreme joy. जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो दोनों कंडीशंस में tears release from the eye. अब ये जो टीयर रिलीज हो रहा है डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा. Yes. Functions of tears: lubricate the surface of the eye, wash away dust particles, help in killing germs, communicate emotions. Next and last is your conjunctiva. It is a thin membrane covering the entire front of the eye. Conjunctiva एक thin membrane है जो कि entire front part को cover किए हुए होती है. It is continuous with the inner lining of the eyelids. Over the cornea, it is reduced to a single layer of transparent epithelium. यानी conjunctiva is made up of transparent epithelium. You must have often heard a very common eye disease, जो कि मौसम चेंज होता है तो भी थोड़ी सी कॉमन हो जाती है, यानी कुछ केसेस या पेशेंट्स उसको देखने को मिलते हैं. दैट इज कंजक्टिवाइटिस, इन विच अब इसमें होता क्या है, दिस आउटर मोस्ट लेयर टर्न्स रेड ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, जिसे आप आँख आना भी बोलते हो. दैट इज वॉट योर कंजक्टिवाइटिस. द बोनी ऑर्बिट सॉकेट, आईब्रोज, टीयर ग्लैंड्स एंड कंजक्टिवा सर्व फॉर आई प्रोटेक्शन इन देयर ओन वेज. यानी अगर हम बोनी ऑर्बिट सॉकेट की बात करते हैं या आईब्रो की बात करें, टीयर ग्लैंड्स की बात करें, कंजक्टिवा की बात करें, तो इन सारी चीज़ों का सिर्फ इतना काम होता है सो एज टू प्रोटेक्ट अवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, दैट इज ह्यूमन आई. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस. आई के और भी पार्ट्स आएंगे. दिस इज अ पार्ट 1. इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन.